शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Remember point of light by being a point of life. In just a point of light, there is an ocean. Point is a seed. If we remember the seed, the whole tree would automatically be remembered. When we remember one supreme soul, point of light, we experience supersensuous joy. When we remember point, all the waste thoughts are stopped. When we are in the embodiment of a light and a point of light, we spread happiness.
योग युक्त स्थिति के लिए, भट्टी में तपने के लिए भी बिंदु स्वरूप की स्थिति। In order to become an embodiment of yoga, we should be in a point of light. We should त्रिमूर्ति के रह remember a point of light. और साथ साथ But today Baba is explaining about Trimurti. बच्चों की माली को जैसे मालूम है Like yesterday Baba said, this confluence age is a pot, वृक्ष कौन सा निकलता है, and we all are flowers in this confluence aged pot. अथवा बीज को देखते ही बीज में से कौन सा फल निकलने वाला है, ये कौन सी आत्माएं हैं जो देवता धर्म की फिर से देव बनने वाली है। By looking at the seed, we get to know which fruit we are going to receive. Because in seed itself, the fruit is hidden. तो आज बाबा बीज और झाड़ का विस्तार Today Baba is explaining about the seed and the whole tree. Baba is also explaining about the Trimurti. मीठे बच्चे, Om Shanti. Today is 15th Feb 2023. Essence. Sweet children, the furnace of yoga is most valuable for you. क्यों कि इस भट्टी से ही Because तुम्हारे it is in this furnace that your sins will be burnt away. भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। It is by this furnace that your sins will be burnt away. Question. क्योंकि बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट Which children have the knowledge of the seed and the tree very clearly in their intellects? है, Answer. जो विचार सागर मंथन करते हैं। Those who churn the ocean of knowledge. विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का The early morning hours of nectar is a very good time for churning knowledge. अमृत वेले उठकर Wake up early in the morning and let your intellect remember the one Baba. और तुम्हारा अजब्बा जाप चलता रहे। Let the soundless chant continue. सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा There is no need to say Shiv Baba in a subtle or physical way. बुद्धि से याद करना है। Remember him with your intellect. ओम शांति। Om Shanti. रूहानी बाप बैठकर The spiritual father sits here and explains to the spirits. अर्थात बच्चों को समझाते हैं। That is, he explains to the children. बाप कहते हैं The father says, मुझे भी जिस्म है, I also have a body, तब तो बात कर सकता हूँ। and this is how I am able to speak. शरीर का आधार लेता हूँ। तुम भी ऐसे समझो You should also think, I am a soul इस जिस्म द्वारा and I am listening through this body. सुन रहा हूँ। सुन के ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। You have to imbibe this knowledge very well. जैसे बाप के पास धारण की हुई है, Just as the father has imbibed it. आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। Knowledge is imbibed by the intellects of the souls. बुद्धि का योग मेरे साथ लगा। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए Just as it is in the father's intellect, बाप की बुद्धि so your intellects should imbibe it. बुद्धि
The explanation of the seed and the tree is very easy. कि बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा, A gardener has knowledge of how a huge tree will emerge by planting such and such a seed. ये बुद्धि में धारण करना है. जैसे मेरी Baba explains that this also has to be imbibed by your intellects. बुद्धि में रहना चाहिए. Just as all of these remains in my intellect, so it should also remain in yours. वो रहेगा कब? कब रहेगा? That will only happen when you churn the ocean of knowledge. करेगी. विचार सागर मंथन करने का समय The early morning is a very good time for churning the ocean of knowledge. समय धंधा आदि कोई नहीं रहता है. You don't have any other business etc. at that time. भी मनुष्य सवेरे करते हैं, People also perform devotion early in the morning. जाते रहते हैं. They go here and there. तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो स्नान करने बड़ा जल्दी जाते हैं. वह बैठ करके कोई नाम जपते हैं, वह गीत Or गाते हैं, sit somewhere and chant a name. Or sing songs and make a lot of noise. अंदर ही अंदर राम 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 रटते हैं. Some just say Rama, Rama internally. अंदर ही अंदर उसको भक्ति में अजपा जाप कहते हैं. मतलब कि बाहर से शब्द नहीं. कोई फिर माला भी फिरते रहते हैं. That is soundless chant of devotion. तुमको शिव बाबा कहना नहीं है. Some even rotate a rosary. जो लोग भक्ति You don't need to say Shiva Shiva. वो ज्ञान में नहीं. The things that people do on the path of devotion should not happen in knowledge. बहुतों को आदत पड़ी हुई है. Many have the habit of chanting Shiva Shiva. तुमको शिव शिव न स्थूल में You do not need to say Shiva Shiva either in a physical or a subtle way. क्या है. जहाँ प्यार होता है, जहाँ संबंध होता है, वहाँ जपने की बात नहीं. Where there is love, where there is a relationship, there we do not need to chant. रूरिहान चलती रहती है. तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप आया हुआ है. You children understand that a father has come. जरूरत नहीं. आएगा जरूर कोई शरीर में ना. उनका अपना शरीर तो है. He would definitely come in someone's body. वो पुनर्जन्म. He doesn't have a body of his own. He is beyond rebirth. मनुष्य सृष्टि में होता है. Rebirth takes place in this human world. विष्णु के दो रूप. Lakshmi and Narayan are the two forms of Vishnu. सृष्टि चक्र में कौन आने वाले, जन्म के साइकिल में कौन आते हैं. अच्छा, देव देव महादेव कहते हैं. People say Dev, Dev, Mahadev. In brackets, deity, deity, great deity. देव देव महादेव. ब्रह्मा और विष्णु का Brahma and Vishnu have a connection with each other. महादेवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवता कहते हैं. फिर शंकर को महादेव कहते हैं. Whereas Shankar has no connection at all. ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है. शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है. सृष्टि चक्र में इसलिए उनको शंकर बड़ा महान. Brahma and Vishnu come into the cycle, whereas Shankar doesn't come into the cycle. That is the reason why Shankar is called Mahadev. This is why he is given greater importance. He does not take rebirth. He receives the subtle body. पिछला क्लियर होता है, आगे का बस है. फल और बल मिलता है भविष्य में.
Shiv Baba doesn't even have a subtle body. शंकर को सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा Shankar does have a subtle body. तो साकार शरीर है। Brahma and Vishnu come into the rebirth cycle, so they have a body, physical body also. इसीलिए फिर But Shiv Baba doesn't even have a subtle body, and this is why he is the highest of high. वो बेहद का बाप है। He is the unlimited Father. देव महादेव ब्रह्मा देव विष्णु देव, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, सृष्टि के चक्र में आने वाले शंकर सिर्फ परमात्मा की रचना में सूक्ष्म बदन में Shankar has just a subtle body, and Shiv Baba doesn't have a body, both subtle or physical. नहीं है, इसीलिए वो सबसे ऊंचे के ऊंचे हैं। त्रिमूर्ति में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का मतलब है कि ये In the Trimurti picture, we say Brahma, Vishnu, Maheshwar. वो ये बेहद का बाप है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से You children understand that you are claiming the unlimited inheritance of happiness from the unlimited Father. बेहद के सुख का वंशाली मिलेगा कैसे? But how will we receive the inheritance? Baba says you have to follow the Father's Srimad completely. It is as though those who have remembrance and inspire others to have remembrance become Baba's helpers. Remember the Father and the inheritance. Baba continues to explain to you children 84 जन्म पूरे हुए हैं। that your 84 births are now almost completed and that very little time now remains. In a play, actors understand when only half an hour remains that they will then go home. टाइम देखते रहे, They continue to watch the clock. तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है Yours is an unlimited, huge clock. कि अब घर चलना है। It has been explained that you now have to return home. तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। By remembering the Father, your sins will be absolved. है नहीं, In no other scriptures is such easy yoga mentioned. बहुत हठ योग करते हैं, बहुत They do a great deal of Hatha Yoga. तुम माताएं तो वो कर नहीं सको। तुमको हठ योग They make a lot of effort. You mothers are not able to do that. अवसर नहीं लगाना। You don't have to sit in special postures like Hatha Yogis do. हाँ, सभा में ठीक होकर के बैठते हैं। Yes, you do have to sit with discipline in the gathering. Yours is Raj Yoga. डबल दोनों टांग टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं। बाबा फिर सहज करने के लिए You have to sit in a semi-lotus position. तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ा कर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। By your sitting in such yoga, in such a royal way, there will be intoxication. In Hatha Yoga, they interlock their legs. Baba doesn't give you such difficulty. However, there has to be a slight difference in sitting in an ordinary way and sitting in yoga. बैठे चेयर्स पर बैठे और फिर कैसे बैठते हैं, बैठक कैसी हो, स्ट्रेट अच्छी, ऐसे नहीं जो फिर आराम से बैठे तो योग ही ना लगे। You should sit up straight नशा चढ़ेगा। like a yogi. बैठना ऐसा चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग है। You should studying Raj Yoga, and so you should sit in such a way that human beings understand that this is Raj Yoga. तुम बेहद के These are your royal manners. राजाओं का राजा बन रहे हैं। You are being made into kings of kings by the unlimited Father.
You should remember such a father again and again. याद नहीं किया जाता है। You do not remember the father in the golden age. सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने आप को किया जाता है। You only remember yourselves because you are soul conscious in the golden age. और कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने आप को जानते। In the Iron Age, souls neither know the Father nor themselves. They simply call out to the Father. विशेषता क्या है? You have now come to know Baba very clearly. पूरा परिचय है बाप का, संबंध है, We have relation with Baba. अच्छी तरह से। We know him very well. और कोई ऐसे नहीं समझते। No one else understands that the Father is a dot. ऐसे और कोई नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं, They say that he is very subtle, उससे न्यारा भी। and yet they also say that he is brighter than a thousand sun. पहले तुम भी ऐसे ही समझते थे, परमात्मा हजारों सूर्य से तेज वाला Initially, you also used to think like that. समझते थे। He is brighter than a thousand suns. बाप कहते हैं Those things don't match. तेरी से मिलनी थी। Since they say that he is beyond name and form, शुरू में परमात्मा का तेज how can they say that he is brighter than thousand suns? Previously, you also used to think in that way. The Father says this explanation had to be given later on in Brahma. The subtlest and deepest aspects have to be understood and then explained to others. कि पहले हजार Don't think, तेजों में क्या why were we told previously that God was brighter than a thousand suns, and that we are now told that he is just a dot? डिग्री लेते हैं, It is only when बड़ा माना जाता है। तो ऐसी ऐसी Baba says it is only when someone is studying for the ICS, Indian Civil Service, that he would speak about the ICS. How could he speak about it beforehand? There is no need to be confused about this. According to the drama, when Baba has to explain, he will explain. Baba will explain further because the Father's influence has to spread. क्योंकि बाप का भी तो प्रभाव निकलना है ना, Just as you are souls, जैसे तुम्हारी in the same way, he too is a soul. परम धाम में रहते हैं, He resides in the supreme abode. को परमात्मा कहते हैं। He is called the Supreme Soul. When he comes here, he gives knowledge. बाप कहते हैं कब आना फिर कब होता है परम धाम से, जब पतित दुनिया होगी। The Father says, when the world becomes impure, I come to purify it. They call out, O purifier, O remover of sorrow, bestower happiness, come. He comes at the confluence age. When the night is over, the day will begin, पुरानी दुनिया का अंत होगा, and it will be the end of the old world. कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। You will reach your karmatit stage at the end. तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, You have to live at home. छोड़ना भी You must not leave that. शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते
remain as pure as a lotus flower while forming connections for the livelihood of your bodies. देवता है, हमारा जीवन का लक्ष्य ही है मनुष्य देवता। Our aim is to become deity. Deities were completely pure. But when and how did they become like that? कब बने, कैसे बने? जरूर कोई पुरुषार्थ किया होगा ना। Surely they must have made some effort in order to receive their award. तो देवता बनने की पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। Their award was created according to their efforts. As are the actions, so will be the reward. This continues to happen. कर्म सिखलाने वाला जब आवे, श्रेष्ठ कर्म कराए, दिव्य कर्म करते, उसकी प्रारब्ध है। कर्म करते कर्म It is when the Father comes and teaches us to do the good deeds. That is when we do good deeds and receive a reward. सिखलाने वाला बाप मिला है। कर्म तो You have now found the Father, the one who teaches you how to act. तो अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है। उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। You have to remember him very well. अभी याद कैसे डबल दशा है। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। You are adopted children. ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। We are adopted through Brahma. एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में There is a great deal of adoption among the Marwadis, a tribe in Indian. You too are adopted. तुमको ब्रह्मा के गर्भ से नहीं निकले हो। You are not born through a womb. एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं। ब्रह्मा बाबा When someone is adopted, he remembers both his fathers. तू एडॉप्ट किसके बच्चे बन गए थे? माता पिता ने एडॉप्ट किया है। एडॉप्शन में लौकिक बाप भी याद रहता है, जिसके पहले जिसके माँ बाप थे। कोई गरीब का बच्चा शाहूकार के पास आ जावे, ऐसा नहीं कि पुराना बाप गरीब। When someone is adopted, he remembers both his father. तो बाप कहते हैं एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं। अंत तक वो जानते हैं Until the very end of his life, he remembers whose child he really is and also the father who adopted him. किसके थे। You also know whom you used to belong to किसके बच्चे बन गए थे और अभी किसके बने। and whose children you have now become. मैं एडॉप्टेड हुआ हूँ परम। You know that you have been adopted by the Supreme Father, the Supreme Soul. परमात्मा ने मुझे एडॉप्ट किया है और वो स्वर्ग का रचता है। He is the creator of heaven. समय चलते For how long does his creation last? आधा कलम। For half a cycle. फिर हमको माँ से किसने ले लिया? कौन चुरा के ले लिया? रावण। फिर नरक का रचता रावण है। Ravan is the creator of hell and his kingdom also lasts for half a cycle. From Sato Pradhan, it becomes Tamo Pradhan. ये समझ की बात है ना। This has to be understood. के बच्चे बन गए थे तो क्या बन गए थे? दुख धाम में तमो प्रधान बन गए थे, अनाथ बन गए थे। We totally became Tamo Pradhan when we came to Ravan's kingdom. And now Baba is again making us Sato Pradhan. और फिर जन्म कितना अलौकिक। ब्रह्मा को कोई शादी कर माता पिता दोनों। Our birth is also very special. It is Alaukik birth. तुम्हारा चलता है। ये समझ की बात है। कुछ समझ में न
If you don't understand something, you can ask. जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है, When there is an eclipse of the sun or the moon, तो छूटे ग्रहण they say, give a donation and the eclipse will be removed. चंद्रमा The sun and the moon are memorials of the father and mother. सूर्य चांद माँ बाप को कहा जाता है, तो यहाँ भी दोनों को ग्रहण लगता है। Here, both males and females experience an eclipse. पांच विकारों का दान This is why it is said, give the donation of 5 vices. ग्रहण लगता है सूर्य को अथवा चंद्रमा को, वो तो वर्ष में एक दो बार ही लगता है। There is an eclipse once or twice a year. Here, it is a question of every cycle. Only once does the father come to take this donation. ग्रहण लगने से परछाई पड़ती है ना धरती की, तो ग्रहण लगता है, तो हमारे पति देवन की परछाई पड़ी ना, तो बात पर एक ही बार दान लेते हैं, मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए, Only once does the father come to take his donation. आयरन एज में आ गए, Human beings have become completely ugly. कालापन अथवा आयरन एज किस This is the Iron Age. जे सोने में अलॉय डालने से, अलॉय पड़ने से काला हो जाता है, उसकी चमक कम हो When real gold has alloy mixed into it, it becomes tarnished. This is the new home and the old home. जाती है, टाइम जाता जाता है बूढ़े हो जाते हैं, There is a difference between a newborn baby and an old person. नए बच्चे और बूढ़े बच्चे में फर्क तो है ना, है तो वही व्यक्ति, छोटा बच्चा कितना मीठा और प्रिय लगता है, A little baby is very sweet and lovely और इम्प्योर का कॉन्ट्रास्ट है, because a small baby is very pure, कॉन्ट्रास्ट है, तमो and as he grows, डार्कनेस he becomes tamopradhan. संपूर्ण पूर्णमासी से मोहब्बत से हो गए, आत्मा एकदम की लाइट 100% गुम हो गई, लकीर फिर Baby ऐसा नहीं कि बाबा ने when a baby takes birth, it is very pure and it is very light and satopradhan, फिर से पूर्णमासी हो गया, just like a full moon. तो कब अंदर है So there's a difference पवित्रता में between और अपवित्रता, full purity, total purity and impurity. छोटा बच्चा कितना प्रिय लगता है, वो प्योरिटी है, इनोसेंस की, In the same way, a small baby is very sweet and lovely because he is very pure. गोद में बिठाते हैं, Everyone kisses a baby and takes it in their lap. भूत हो जाता है, But when the body becomes old and decayed, they say it is better to renounce it. Why should more pain be endured? A soul sheds a body and takes another. शरीर में बीमार होंगे, तो बाबा ने कहा At that time, maybe some of Baba's children were sick. So Baba says, यानी आत्मा को ये here you don't allow to sick to die. समझ से शरीर छूट गया, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है ना, Here you don't allow the sick to die because the more they listen, the better it is. बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है, Let them continue to remember Shiv Baba and the inheritance. People forget everything when they are ill and in lot of pain. However, the one in whom they have faith appears in front of them at that time. Your promise is, mine is one Shiv Baba and none another. तुम्हारा किसमें क्या वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा,
Your promise is, mine is one Shiv Baba and none other. So, why do you remember someone else? मेरे बगैर किसकी भी स्मृति ना आए। The father says, you should not remember anyone except me. अनंत काल जो स्त्री सिमरे, It is said, someone who remembers his wife at the end will reach his destination accordingly. वैसा ही संस्कार लेके जाएंगे। सारा श्लोक है उसमें, अलग अलग धन को याद किया तो क्या बनेगी, There's a slok in Gita. शरीर छोड़ा तो क्या बनेगी। At the end time, if you remember money or if you remember anything else, the next birth will be like that. है सारे संगम की बात। Although they recite the whole of this verse, they do not understand the meaning of it. भक्ति में गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाबा All the things they remember on the path of devotion are from the confluence age. उसमें उस श्लोक में है कि अंत में जो नारायण सिमरे In that verse, it is said, in the end time, if you remember Narayan or if you remember your destination, your aim, you will achieve it and your birth will be like that. Baba says, they do say those verses but then they don't know the meaning of it. श्री नारायण तुम्हारी प्रारंभ है। At this time, you simply have to remember the father and the inheritance. The status of Sri Narayan is your reward, and so the full meaning of this should be in your intellects. Many people remember it without understanding the significance of it. At the end, whomsoever you have the most love for will be remembered. So Baba says you have to remain very cautious. को याद करना एक बाप को, You only have to remember the one father. बाप कहते हैं मन मना भाव, The father says, Man mana bhav. You children say, Baba, we meet you every cycle. We come to Madhuban to receive this knowledge from you. This is the mantra that disciplines the mind. The Sadguru gives you such a mantra that you become immortal. पाने का मंत्र है। This is the mantra to conquer Maya. This is due to this, they say that Tulsi Das rubbed some sandalwood on a stone and that God then appeared and gave him the tilak of sovereignty. That applies to this time and it is remembered later on. You children are receiving the unlimited tilak of sovereignty by remembering the father and the inheritance. बाप और बादशाही If you leave the body in remembrance of father and the kingdom, you receive a tilak of sovereignty. एक को तो नहीं मिलेगा ना। It is not that only one will receive it. 16 There is rosary of 108 and also the rosary of 16,108. बाबा के लिए क्या Now, simply remember Baba accurately. For Baba, it is said, your ways and means are unique. Only you know them. This is accurate. He is the one who grants salvation and he is the one who knows. Previously, you simply used to sing this without understanding the meaning of it. That is called meaningless. अनर्थ, विदाउट मीनिंग, मीनिंगलेस, प्राप्ति कुछ भी नहीं। There was no attainment at all. दान पुण्य आदि करते उतरते या While giving donations and performing charity, etc., human beings have continued to fall without achieving anything. दूसरा मनुष्यों की Everything has become meaningless by devilish dictates by followed. उससे अनर्थ हो जाता है। कुछ न कुछ Without understanding the meaning, कर
whatever we do, it is meaningless. व्यर्थ अनर्थ So it becomes useless and waste. मिसाल देते ब्रह्मा भगवान ये भी नारायण की पूजा करते थे अब फिर पूजा Shiv Baba says, this one, that is, Brahma also used to worship Narayan. And from being a worshipper, he is now becoming worthy of worship in a practical way. You children now understand that Shiv Baba is teaching us. You have to remember this firmly, otherwise, your sins will not be absolved. This furnace of yoga is most valuable. अच्छा कोई कहते You also receive liberation. Some say that they want peace of mind. Ask them. First of all, tell us who made you peaceless. Previously, you were peaceful. कोई ने अशांत किया है ना You have now become peaceless. And this is why you ask for peace. तो सारी दुनिया को चाहिए The whole world needs peace. एक को शांति मिलने से तो कुछ हो नहीं सकता Nothing can be achieved by just one person receiving peace. थोड़ी शांति हो सकेगी The whole world is not going to become peaceful just because one person receives peace. Who made you peaceless? They become confused. It is explained that there is land of peace, the land of happiness, and this land of sorrow. There are very few human beings in the land of happiness. सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे उस समय At that time, all other souls are in the land of peace. को शांति वहाँ मिलेगी You will receive peace there. You cannot receive it here. Here, it is land of sorrow. धाम में शांति होती है And there is peacelessness at times of sorrow. बहुत सहज है किसी को भी समझाना है This is very easy to explain to anyone. तो बाबा ने ये भी बताया जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है Baba also says, where there is purity, there is peace and happiness. ने सिखाया Because it is the Father who teaches us the good acts, good deeds. शांति के द्वार कौन से यार सुख और शांति का तरीका कौन सा है ये तो बहुत सहज है किसको भी समझाना है सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप This is very easy to explain to anyone. There is only the one Father who gives you the inheritance of peace and happiness. है कि मेरा मन शांत हो In the golden age, there are both peace and happiness. Here, soul wants their minds to become peaceful. But you have to go to home, to your supreme abode for that. However, no impure soul can go up there. And so, this is why the Father explains, remember me and your final thoughts will lead you to your destination. जाओ शांति धाम में शांति के लिए परंतु पतित फिर वहाँ जा नहीं सकते इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो Father explains, remember me and your final thoughts will lead you to your destination. और श्रेष्ठ कर्म और इसका आधार श्रीमत श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म होते हैं परमत पर According to Srimad, we do good deeds, good acts. और वर्षे को याद करो Baba says, remember the Father and the inheritance. पवित्र नहीं बनने However, Maya is such that she doesn't allow you to become pure. Just look how innocent ones are assaulted. जो माताएं बंधन में हैं, उनकी ही बाबा बात कर रहे हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं बाबा के पास समाचार आते She cannot remain without poison. से बड़ी Baba receives many types of news. काम महाशत्रु The greatest violence is lust, काम the enemy. सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है The Father says,
Children, renounce poison. सब बाबा को बना रहे हैं। Do not dirty your faces. विष छोड़ो, विकारों को छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करें। They say, yes, we will try. बाबा फिर से समझाते हैं, जैसे कोई जहर पीता है तो बहुत बॉडी काली हो जाती है। Baba says, this is the poison आदि मध्य that causes you sorrow from its beginning through the middle to the end. However, if it is not in the fortune, they do not listen. When the Father sits here and tells a soul that from today he should not indulge in vice, he simply looks down. आगे भी ध्यान देते हैं। अच्छा, अब प्रॉमिस करो, आज से विकार में नहीं जाना। तो थोड़ा आंखें नीचे हो जाती, मुंह नीचे कर देते। अरे, काम महाशत्रु है। Lust is the greatest enemy. एनिमी है ना, It is not a good thing. अच्छा थोड़ी है। This is a vicious world. ये पति तो Everyone is impure. दुख शांति क्यों हुई, इसलिए बाबा प्यार से समझाते, छोड़ो इन्हें। It is because of these vices you became peaceless and unhappy. In the golden age, all are completely viceless. Acha, to the sweetest beloved, long lost and now found children, you have come and met Baba after a cycle, that is, after 5,000 years. Love, remembrance, and good morning from the mother, the father, Bap Dada. The spiritual father says namaste to the spiritual children, and we spiritual children says namaste to spiritual father. Essence for dharana. First point, very little time remains. इसीलिए Therefore, बाप को पूरा पूरा become complete helpers of the Father. करके रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है, Remember the Father and the inheritance, कराना है। and inspire others to do the same. सेकंड पॉइंट, Second point, अंत समय में in the final moments, एक बाप की ही याद रहे। only the Father should be remembered. विधि क्या है, अंत में बाबा ही याद रहे। दिल की प्रीत For this, let your heart have love for the one Father. बाप बगैर Don't remember anyone except the Father. Be very cautious about this. के लिए खबरदार रहना है। वरदान है सोचना, Blessing. कहना, May you become equal to the Father by making your thinking, speaking, and doing equal. इन तीनों को समान बनाने वाले May you become equal to the Father by making your thinking, speaking, and doing equal. बाप दादा अब सभी बच्चों को Bap Dada now wants to see all the children complete and equal to him. संपन्न बनने के लिए In order to become complete, सोचना, let your thinking, कहना speaking, और करना and doing be equal. तीनों समान हो। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, You have to make all the preparations for this. भी संकल्प भी है, You have this thought यही है। and you also desire it. लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी But this desire will only be fulfilled से
when you become ignorant of the knowledge of all other desires. इच्छा मात्रम अविद्या बनेगी और सब इच्छाओं को भूल जाएंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की Many little desires do not allow this one desire to be fulfilled. इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। स्लोगन है Slogan: कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। in order to experience the Avyakt and Karmatit stage, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है make your words, actions, and the way life equal. तीनों को समान बनाओ। अव्यक्त इशारे विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में Avyakt signals: सहज सफलता का the method of easy success on the field of service of world benefit is the Father's revelation through your practical proof. जो बोलो वो लोग को देखें जो हम कह रहे हैं। People should see whatever you speak of. बोलते हो कि हम ब्राह्मण You say that you Brahmins are the almighty authority. हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे We are children of almighty authority. We are Master Almighty. You are the masters of all powers, हम रह the conquerors of Maya, रूहानी से merciful and spiritual servers. अपने टाइटल याद करते हैं ना। So these are our titles. So whatever you speak of should be your practical form. जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। शिव जयंती सो, ब्राह्मण जयंती सो, गीता जयंती सो, नए युग की जयंती। Shiv Jayanti, विशेष आप सबको Brahma Jayanti and Gita Jayanti, all three in one. So हर टाइम बाप दादा कोई ना कोई विशेष वरदान कार्यक्रम मोटिवेशन। every time Baba gives us the blessings पिछले साल जनवरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव से and he keeps on inspiring us to do different more projects. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ उसका कार्यक्रम में And this time also a new campaign, a new project will be inaugurated by Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of India. जल जन अभियान Jal Jan Abhiyan. आदरणीय मोदी जी की कर कमल द्वारा लॉन्चिंग होगा। जल This would be inaugurated by Narendra Modi, the Prime Minister of India, tomorrow. जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, Minister of Water शक्ति मंत्री जी को उपस्थित रहेंगे। आज शाम को यह will be present here with us. शिवाय He will reach Shantivan today evening. एक्टर भी है, सोशल वर्कर है, नाना पाटेकर है, Nana Patekar, a very well-known actor, आदि आदि बहुत लोग poet, and many more people would be arriving to Shantivan. मोटबू में जान सरोवर मंडपम में रहने वाले नीचे कॉलोनी हॉस्पिटल लगो रोड जो भी आप सबको कल All the guests who would be arriving would be staying here. आप सबको साथ साथ में All the brothers and sisters are invited for this special program. 1 बजे तक भी होगा। इसलिए आप सभी पहले बीच में उठना नहीं और ये बात कल भी एक बार अनाउंस करेंगे। और साथ साथ में अभी जो भी गाड़ियाँ लेकर के आए उन सबसे विनती And it is requested to all the brothers and sisters who have their vehicles in and around the Diamond Hall कोई भी गाड़ी खड़ा करना तो पुलिस उठा करके उसे दूसरी जगह
We request you not to park your vehicles in and around the diamond hall. और साथ में सभी फॉरेनर्स भाई बहनों को भी निमंत्रण है, they can come around 10:45 or 11 o'clock. All the double foreigner brothers and sisters are also invited for this program. सबको भी मैं हार्दिक निमंत्रण देता हूँ। You all are invited for this जो उद्घाटन कर रहा है और भारत program प्रीति भी रहेगा, because this is inaugurated by the Prime Minister of India. दिया रहेगा, आप सभी रहेंगे, आप सबका योग बल, आप सबका वाइब्रेशन, आप सबका डिसिप्लिन, आप सबका So we request you all to come here बाबा का because संकल्प your good vibrations, your good thoughts अपने मैसेंजर को भेजता है, अपनी पूर्ण will help us to spread the message of Supreme Soul, Supreme Father throughout everyone. और उसका डिटेल बाद में कभी सुनाएंगे एक बार। मेरे को इतना भी आप सबका सहयोग हम अपेक्षित करता हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी इसमें भागीदार बने। एक तो शांति का पाठ करते हुए, शांति का वातावरण बनाते हुए, पावरफुल वाइब्रेशन बनाते हुए, Let us spread a powerful vibrations जानते हैं विश्व एक संकट की परिस्थिति में है, युद्ध की वातावरण as we know that the world is also, का बदलाव हो रहा है। ऐसी सब the nature is also showing its acts. We know what is going in and around the world. So we should spread peace and love vibrations throughout the world also. ये काम करोगे, सेवा करोगे, संदेश दो, ये शांति का कार्यक्रम को ऐसे इसी वातावरण में बिल्डअप हो रहा है, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी I thank you all also for your cooperation. शांति। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. जी कह रही हैं सभी माताएं या जो जाने वाले बैठ जाएं, अभी नाश्ता थोड़ी मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अगला लाइन, योग की तपस्या, योग की भट्टी बहुत वैल्यूबल है। ध्यान से सुनिए, योग की भट्टी बहुत As today Baba said, the furnace of yoga is very valuable. ज्वालामुखी तपस्या। So today, राजस्थान that is tomorrow morning at 2 a.m. there would be a इसी हॉल meditation furnace of yoga. 16 मॉर्निंग हो जाएगा 2 बजे। तो जो आएंगे So all the brothers and sisters are invited for this tapasya from 2 a.m. onwards साजन आया परम धाम से। tomorrow. भाई बहनों, तपस्या कीजिए, बाबा का एक विक्रम विनाश होगा। Baba says, if you do tapasya, all your problems would be absolved. और इसका आप देखेंगे pmtv.in में अवेलेबल होगा। The live telecast is also being given in the peace of mind. तो 2 बजे रात को जो मनमोहिनी में है वहीं नहीं बैठिएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं सारे जगह। जो हमारे वीडियो डिपार्टमेंट से भी उनका सूचना है कि आप इसमें उपलब्ध होगा। We have live telecast of this tapasya. Om Shanti. Om Shanti. Classes start Today's schedule is as follows. सुबह 10 से 10:30 From 10 to 10:30 there would be a meditation in the Diamond Hall. 10:30 to 11 Jaipur Poonam Didi would रहेगा बंधनों से do a class. युक्ति 11:30 से 12:30 From 11:30 to 12:30 का क्लास होगा और
there would be a class of Dr. Savita Didi. निश्चिंत खुशनुमा ब्राह्मण जीवन। शाम को 5 से 5:30 बजे योग रहेगा। Evening 5 से 5 to 5:30 meditation. 5:30 to 6 का विषय रहेगा Geeta Didi would, a class will be there by Geeta Didi. 6:30 से 7:30 बजे लंदन From 6 to जी का क्लास होगा। 6:30 क्लास का विषय रहेगा there would be a class by Dr. Jayanti Didi. 7:30 से 8 बजे तक डायमंड हॉल में ही सभी का 7:30 to 8 there will again be a meditation. यहाँ सरस्वती भवन में ही New York Mohini Didi ji is residing in Saraswati Bhavan itself. शांतिवन में सेवा के लिए रुकना All the brothers and sisters who would like to give their seva in Shantivan after the Bap Dada Milan, please do make your names noted in Shantivan Sevadhari office. ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 5 में रखी गई है। युवा प्रभाग में रुचि रखने वाले भाई बहने और इस विंग से जुड़े हुए भाई बहने Yuva Prabhat Wing meeting has been held at Training Center Hall number 1. रिन्यूअल पत्रिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए ज्ञानामृत भवन में In order to be a member for World Renewal magazine and have a membership, do make your names noted. 5 रुपए वाली टिकट जारी की है। जिसको भी सेवार्थ पत्र व्यवहार के लिए टिकट चाहिए ज्ञानामृत भवन में बीके बख्शी भाई जी से प्राप्त कर सकते हैं। A stamp of Dadi Janki ji has been बजे ट्रेनिंग सेंटर के हॉल नंबर 1 में ब्रह्मा कुमारी today 9 o'clock ट्रेनिंग रखी गई। Training Center Hall number 1. There's a meeting for all the brothers and sisters who do classes. पत्रिका के नए सदस्य बनने एवं रिन्यूअल करवाने वाले सभी भाई बहने मीडिया ऑफिस आनंद भवन या एवर हल्दी हॉस्पिटल के सामने मीडिया काउंटर पर संपर्क करें। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखा